what are okay? So what are we doing in the process of biotechnology? Okay, तो आमे कौन करूचे से तरह में देखो ची. In the last century, when scientists discovered that nucleic acid is the principal molecule of responsible for gene expression, attempts were made to alter the genetic makeup of an organism by manipulating nucleic acid directly. ହେଲା ଆମେ ଯେବେ ଜାଣିଲେ କି DNA ହେଲା या RNA ହେଲା ସେଟା जेनेटिक मटेरियल तो ताको ଆମେ छेड़छाड़ करिले त ସେଇଥିରେ DNA କିଛି जीन्स ऐड करिले या ସେଇଥିରୁ କିଛି जीन्स डिलीट करिले ହେଲା. So various methods used for directly manipulating the genome of an organism are collectively referred to as recombinant DNA technology or genetic engineering. ताको डायरेक्टली हमें मैनिपुलेट करते जेमति बैक्टीरिया जीन रे हमें ह्यूमन इंसुलिन जीन ऐड करबा तो ह्यूमन इंसुलिन जीन इज नॉट अ बैक्टीरियल जीन so we are adding our gene हैला सही बराबर. Recombinant DNA technology has been possible due to rapid progress in various fields of biology. तो बायोटेक्नोलॉजी जो हैला तबे इवन बायोटेक्नोलॉजी बुझिया पे तुमको सही सब फील्ड जाने हम पड़िबो लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब बुझिबो सब जति बुझुछ ताहाले तमे बायोटेक्नोलॉजी रे बुझी काना ये सब जकर कांसेप्ट को यूज करूछ. आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स माने आमे कोन करिबा आगो बैक्टीरिया रो डीएनए टा को आइसोलेट करिबा ताको प्यूरिफाई करिबा followed by the understanding of their structure, property, function, and finally their sequencing in the last century. एबे आमे इवन डीएनए सीक्वेंसिंग करि पारुछु माने को बेस पर को बेस अछि आमे सेटा सीक्वेंस भी करि पारु. ओके these are important contributions हैला. The first breakthrough माने biotechnology first breakthrough was to establish that a fact that DNA of an organism not only carries its genetic information but also propagates it from one generation to another. माने डीएनए तार जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो कैरी करूची बट तार रेप्लिकेशन पे भी रेस्पोंसिबल अछि. एटा हमें जानिले जेबे ताहाले हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करिया पे ताको चेष्टा करबो. The next hallmark was the determination of chemical and physical structure of DNA molecule. हैला जो हमर डबल हेलिकल मॉडल डिस्कस करथिले वाटसन एंड क्रिक तो ताकू जानि परिबा तार डिटेल्स जानि परिबा ता हमर बायोटेक्नोलॉजी सेकंड ब्रेक थ्रू हला मेजर थिंग. फर्दर रेप्लिकेशन माने कोन डीएनए टू डीएनए और आरएनए टू आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन माने कोन डीएनए टू आरएनए एंड ट्रांसलेशन माने mRNA to proteins was understood in detail by scientists. ठीक है ना तो सही पे this is another very important feature. Clear? So 80 तमे scientists मनकर फोटो देखुछ these are very important scientists. So thus new enzymes for the restriction जो हमर जो नुआ नुआ enzymes हमें तैयार करले which act as molecular scissors. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है इसको हम ठीक है पर डिस्कस करिबा आगे ठीक इंट्रोडक्शन टा हम डिस्कस कर दोची. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रे डिस्कवरी ताकू हमें मॉलिक्यूलर सीजर भी को काहे की एना से डीएनए कटा कटी रे सहायता करो तो सेही पे हमें ताकू मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहू. ठीक अछि. सो हु डिस्कवर्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स? वर्नर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ and Daniel Nathans. Werner Arber, he is Werner Arber. Here hochi Hamilton Smith and he is Daniel Nathans. तो ये तीन जन मिसिकी कौन डिस्कवर करले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ताकू आमे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहउछु. तो ये पॉइंट लिखि दियो खाता रे सी एबेठू नीट एते सहज रहिबनी जेमति आगो रहउतला एबे 2025 रे जेमति पेपर टा टिके टफ हला लेंदी हला एबे बायोलॉजी सेही वाला टफ और लेंदी हबो हेला. तो सेही पे हमकु सब प्रकार रो डिटेल्स आईडिया नेबा अछि हेला. सेमली ओके एंड डीएनए लाइगेज तो तमे डीएनए काटी देलो ताले तापर जोड़ीबो किमिति
तो आउ थे काटिकी आमे ताकू जोड़िया पड़िबो जोड़िया पे आमे यूज करूचे कौन डीएनए लाइगेज एंजाइम तो हु डिस्कवर्ड डीएनए लाइगेज एंजाइम गेलर्ट इजराइल रॉबर्ट लेमैन चार्ल्स रिचर्डसन एंड हार्विट्ज in 1967 तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डिस्कवर करला आर्बर स्मिथ एंड नेथन्स डीएनए लाइगेज के डिस्कवर करला गेलर्ट लेहमैन रिचर्डसन एंड हार्विट्ज ठीक अछि during this period scientists also noticed that foreign DNA fragments can be taken by bacteria from its surrounding where it can be integrated into its genome माने आमे चाहिले बैक्टीरिया देहरे फॉरेन डीएनए भी ऐड करी पारिबा with all this knowledge scientists asked a question that is it possible to transfer the gene of interest from one organism to another and get its product लोक भाबिले कि देखो गोटे लोकर इन्सुलिन जीन ना ताकू बारंबार इंजेक्शंस नेम पड़छि इन्सुलिन तो इन्सुलिन कोठु तयारी करियो तो जदि बैक्टेरिया टू तयारी करि परिबा बैक्टेरिया कोन बैक्टेरियल रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट तो जदि हमें बैक्टेरिया रु तयारी करै परिबा ताले केते बढ़िया हुअंता तो सेही भलिया लोक भाबिले ओके इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट हमरो एकर जीन ऑफ इंटरेस्ट कोन हेला इंसुलिन जीन तो आमे चाहूचु कि इंसुलिन जीन टाकू ह्यूमन इंसुलिन जीन टाकू आमे आइसोलेट करिवा तापरे बैक्टीरिया रे देह करे पुरेबा एंड तापरे बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करेबा कि से आम डीएनए टाकू रेप्लिकेट करू एंड तार प्रोटीन्स तयारी करू ठीक अछि तो एई दिशा रे गोटे बहुत विराट बड़ अचीवमेंट हैला स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ठीक अछि सो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर दे वर they had expertise है ना तो स्टैनले कोहेन had the expertise in introducing plasmid DNA into E. coli माने प्लास्मिड डीएनए को E. coli भितर ऐड करिया के प्लीज रिमेंबर प्लास्मिड कोन प्लास्मिड गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए हमें डिटेल उडा पर डिस्कस करिया एटा खाली मु तुमको इंट्रोडक्शन टा कर दोची तो प्लास्मिड जोटा सेटा सब बैक्टीरिया रे न थाए हैला तो सेही पे स्टैनले कोहेन was an expert in introducing plasmid DNA into E. coli and subsequent propagation and cloning of plasmids. हेला तापरे सेटा को जे बैक्टीरिया को देई ता बैक्टीरिया देहरे पुरेवा एंड ताको मल्टीप्लाई करे. On the other hand, Herbert Boyer had expertise to cleave double-stranded DNA to produce single-stranded ends with identical termini using restriction endonuclease. तो हर्बर्ट बोयर कौन कले सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करी डीएनए को काटिले तो को भलिया काटिले दैट केथरे सिंगल स्ट्रैंड्स तयारी बुझगलो एटा केमिति होउची आबे टिके पर डिस्कस करिबा तो सिंगल स्ट्रैंड हेले कोन हबो आमे आम डीएनए टा सेथरे जोड़ी पाई अंडरस्टूड सो दैट इज द कंसेप्ट both visualize the potential of combining these two discoveries से माने तो जने प्लास्मिड रे एक्सपर्ट जने डीएनए काटिकी सेथरे डीएनए जोड़ी बारे एक्सपर्ट तो ताहले आमे डीएनए जो प्लास्मिड टा को बाहर काढिबा ओके तापर हर्बर्ट बोयर टेक्निक यूज करिकी ताको काटिबा नवा जीन ऐड करेबा तापरे सेटा को कोहेन रा कांसेप्ट यूज करिकी बैक्टीरिया देहरे वापस पुरेबा. So this is the concept of recombinant DNA technology. है कि नहीं? तो सही पे दी जन मिसिकी एक concept टाकू introduce तो इधर तो हमें देखुच स्टैनले कोहेन and हमारा this is the Nobel Prize which was awarded to them. So the term biotechnology, okay, the term biotechnology को के discover करला The term biotechnology was first used by Caroli Irek in 1919. हैला एडा लिखि दियो तो Caroli Ireki was the first
person to use the term biotechnology in 1919, meaning the production of products from raw materials with the help of living organisms. ହେଲା ତ ଇଏ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରଥମ ଥର ୟୁଜ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍ନର ଆର୍बर, ନାଥାନ୍ସ and Hamilton Smith, they were awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1978 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆର୍बर, ସ୍ମିଥ and Nathans, they were awarded the Nobel Prize for the discovery of restriction endonuclease in 1978. Okay. ତାପରେ ଷ୍ଟାନଲେ କୋହେନ and Rita Levi Montalcini, ଏଇ ଦି ଜଣ କୁ ବି Nobel Prize ଦିଆଗଲା, was awarded the Nobel Prize in 1986 for isolation of nerve growth factor and epidermal growth factor. ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ Nobel Prize ମିଳିଲା, ଠିକ ଅଛି। In 1976, Cohen co-authored a proposal for uniform nomenclature of bacterial plasmid. तो bacterial plasmid ର naming ପାଇଁ भी ସିଏ involved ଥିଲେ। Herbert Boyer, okay, ତାକୁ Herb Boyer ବି କୁହନ୍ତି, is an American biotechnologist along with Stanley Cohen and Paul Berg. So Cohen, Boyer and Paul Berg, they discovered recombinant DNA technology, ଯାକୁ ଆମେ genetic engineering भी कहୁ। ହେଲା। So in 1969, Boyer performed studies on couple of restriction enzymes of E. coli. ହେଲା। ତ ଦିଟା enzyme ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। In August, he produced synthetic insulin. Okay, तो ସେ ଆମର synthetic insulin ତିଆରି କଲେ using his new transgenically modified bacteria. Okay, ତାପରେ 1979 ରେ ସେ growth hormone ତିଆରି କଲେ। Okay, in 1976, Boyer founded Genentech with Robert Swanson, and Genentech approach to the first synthesized insulin, okay, won out over Gilbert's approach at Biogen. Okay, तो आमर Genentech माने भी इंसुलिन तैयारी करुथिले, गिलबर्ट भी गोटे कांसेप्ट देइथिले कि केमती इंसुलिन तैयारी करिवा, but ultimately Boyer won the concept. Boyer built his gene from its individual nucleotides. ये जीरो सबको न्यूक्लियोटाइड जोड़ी के तैयार कले। Paul Berg was a recipient of Nobel Prize in Chemistry. So he was awarded Nobel Prize in Chemistry along with Walter Gilbert and Frederick Sanger. ହେଲା। So Berg माने हमें Herbert Boyer was not awarded Nobel Prize. Okay, so Paul Berg was awarded Nobel Prize along with Gilbert and Sanger. Okay, so they were awarded Nobel Prize. Berg is arguably most famous for his pioneering work involving gene splicing and of recombinant DNA. ହେଲା ସେ DNA को कट करिया पे से साहाଯ୍य करथिले। सो एटा हमर ओटे ओवरव्यू हे गेला हिस्ट्री रा। तो 1919 रे टर्म बायोटेक्नोलॉजी यूज हैला। 1944 रे एवरी मैक्लियोड मैकार्टी described that DNA is the genetic material. 1952 Joshua Lederberg discovered plasmids. 1953 Watson and Crick proposed double helical structure of DNA. 1960 Arber and Messelson discovered type 1 restriction endonuclease. What is type 1? What is type 2? I will discuss later. 1967 Gellert, Lehman, Richardson and Hurwitz discovered ligase enzyme. 1970 Hamilton Smith and Thomas Kelly discovered type 2 restriction endonuclease. So actually ଆମର जो genetic engineering रे type 2 restriction endonuclease टा use होଉଛି, not type 1 ହେଇଗଲା। तो that was discovered by Hamilton Smith and Thomas Kelly. Paul Berg assembled the first recombinant DNA, मतलब DNA from
greater than one host. ठीक है? Stanley Cohen and Herbert Bird developed DNA cloning and recombinant DNA technology. ठीक है? So एड़ा सबू आमर सब हिस्ट्री पार्ट. तापरे 1983 कायरी म्यूलिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कवर करले. 1982 रे एफडीए तमरा ह्यूमन जो इंसुलिन हिमुलिन को माने एक्सेप्ट करला, which was proposed by Eli Lilly and Genentech company हैला. तापरे 1984 रे एलेक्स जेफरीज इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तापर 1986 रे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन for hepatitis B was approved for human use. 1990 रे human genome project तैयारी हला. 1944 रे first genetically engineered crop, that is flavor sour tomato, was introduced. एटा सब मु पढाइबी हमर नेक्स्ट क्लासेस मानकर धीरे धीरे. तो ए फ्लेवर सावर टमाटो हमें पढ़िबा डॉली शीप हमें पढ़िबा कोठी इन द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन प्रोसेस. तापरे कीथ कैम्बल एंड इयन विलमट they discovered dolly sheep. ठीक है? तो these are some histories. 2000 रे गोल्डन राइस तैयारी हला. 1996 रे बीटी कॉटन वाज कमर्शियली रिलीज हला. एडा सब बहुत इंपोर्टेंट जिंस एडा एप्लीकेशन रे पढ़िबा. 2004 रे एवास्टिन गोटे एंटीबॉडी तैयारी हला. 2006 रे recombinant vaccine Gardasil against human papilloma virus, okay, was approved. 2006 रे RNA interference technique was discovered. 2010 रे Robert Edwards was awarded Nobel Prize for in vitro fertilization. ठीक अछि. तो से भेला 2019 रे CRISPR Cas9 genome editing tool discover हला. एंड 2020 रे आमे समस्त जानिचे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 वाज डेवलप्ड. ठीक अछि. तो दीज आर सम हिस्ट्री पॉइंट. हमर जिमिति एनसीईआरटी रो बायोलॉजी बही रहउची सिमिति एनसीईआरटी रो बायोटेक्नोलॉजी बही भी. तो ए सब डाटा से बही रे देइची. तो हमकु सेटा भी देखियार अछि बिकॉज़ यू हैव टू रिमेंबर दैट नीट रे बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दीटा जाक अछि. अंडरस्टूड? चलिए. सो नाउ लेट अस गो टू द कंसेप्ट. एबे आमे पसिबा कोन जेनेटिक इंजीनियरिंग करू. तो राइट रे तुमको मो गोटे प्लास्मिड देखौची. दिस प्लास्मिड इज कॉल्ड पीयूसी. ओके, कोन पीयूसी आबे टिक पर जानिबा. तो नाउ व्हाट डू वी डू इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तमरो गोटे आईडिया रो जोटे ऐड अछि मन अछि आईडिया कंपनी रो जो मोबाइल ऐड रे. तो से कहूँ कि डू यू हैव इफ यू डोंट हैव आइडिया देन बाय आइडिया. है कि नहीं. जो तुम पाखे आइडिया नहीं ताले आइडिया रो सिम नहीं जाओ ता माने से कहो. सेम कांसेप्ट हमें एठी भी डिस्कस करिबा. ओके, सपोज को पर्सन रे गोटे जीन नहीं हैला. सपोज ड्यू टू सम प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ओके, किछि गोटे असुविधा होला नेचर रे गोटे पर्सन देह रे गोटे जीन ना. फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन ना. तो जदि इंसुलिन जीन नाही ताले से पर्सन रे इंसुलिन तैयारी हबनी. हैला कि नहीं. तो सेही पे एबे तमे भाबो कि गोटे लोको जा हमर जनरली ह्यूमन बीइंग रे केतरा जीन थाए पाखा पाखी 30,000 जीन. ओके, तो ए पर्सन हैज अराउंड 30,000 जीन्स किंतु सेथुर गोटे जीन मिसिंग अछि. हैला. सपोज गोटे लोक देह रे ह्यूमन इंसुलिन जीन नाही. तो मैथ सर हमर कोन कहिबे वन जीन आउट ऑफ 30,000 ताको हमें कौन कहिबे सर नेग्लिजिबल मिस्टेक. हम कौन है किछि नाही बोली से कहबे नेग्लिजिबल मिस्टेक. किंतु आमे जानिचे से पर्सन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस रु सफर करिबो. हैला कि नहीं. एंड बहुत कष्ट रे जीवन काटि.
ता माने 30,000 जीन रु गोटे जीन नथिले भी आम मानकु आंठेई दउची बॉडी. So, if you don't have this gene, have the gene. तो ସେଇ जो have the gene को आमे कौन कहबा जीन थेरापी. ओके जेनेटिक थेरापी एटा बायोटेक्नोलॉजी रे एडवांस कांसेप्ट एटा आमे टिके पर डिस्कस करिबा. तो एबे आमे फर्स्ट डिस्कस कौन करिबा तो जदी इंसुलिन जीन नाही इंसुलिन जीन एब्सेंट और कौन और डिफेक्टिव. सपोज इंसुलिन जीन नाही या जीन ता डिफेक्टिव अछि ताहले कौन करिबा गिव इंसुलिन. गिव इंसुलिन. ओके सीधा कथा जदि गोटे लोक इंसुलिन नाही ताकू इंसुलिन दिया जाऊ. तो फर्स्ट टाइम प्रथम थर जेबे इंसुलिन जीन डिस्कवरी होउथला से गोटे इंसुलिन जीन ए गोटे इंसुलिन प्रोटीन को आमे जदि आर्टिफिशियल सोर्स रु नेबा सपोज गाय रु नेबा घुसुडी रु नेबा या काहाटू यूज करी बिकॉज़ हमर तो नाही ना. तो वी डोंट हैव इंसुलिन जीन एंड को हेल्दी पर्सन तुमको इंसुलिन दबनी ता इंसुलिन माने आमे मनीष रु काढी की इंसुलिन आउ को मनीष को दे परिबानी काना से दबनी. ताहाले आमे कोन करूथुलु आग गायरु घुसुडीरु एमितु को अदर एनिमल्स रु इंसुलिन को आइसोलेट करके हमें दउथुलु. बट ins it required more than 20,000 रु 2 लक्ष ऑर्गेनिजम्स. बुझला. तो सपोज सेबे कौन होता बहुत धनी धनी लोक माने से सब जाए कि बुचर हाउस जोटी छेली कटा हुए गाई कटा हुए सेठी ठिया हेबे सेठु ताकर पैनक्रियास को आनिबे सेठु ताकर डीएनए आइसोलेट इंसुलिन टाको आइसोलेट करिवे ताकू प्यूरिफाई करिवे तापर ताकू नेबे. ता माने जदि गोटे लोक को डायबिटीज हेची तार औकात एतिकी हेबा कथा थिला कि से 20,000 रु 2 लक्ष पशु रु सही हार्मोन टा कलेक्ट पारियार तार औकात हेबा कथा थिला. बुझिलो कि नहीं. बट इतनी हेले हाउ द नॉर्मल पर्सन विल गेट इंसुलिन. सो दैट इज व्हाई लोको कौन करिले दे डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. तो आमे गोटे ऑर्गेनिज्म तो स्टेप 1 कौन देखाई छी देखो एथरे स्टेप 1 लिखाई छी चॉइस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर. तो आमे सपोज होस्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करबा काकू बैक्टीरिया को. तो सपोज आमे होस्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करबा बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया आम पे इंसुलिन तैयारी करी. तो बैक्टीरिया रे आमे को क्लोनिंग वेक्टर यूज करि परिबा. वेक्टर माने किए जी आमर डीएनए नै कि ताकू दबो. सो आमे प्लास्मिड यूज कर परिबा. ओके तो आमर होस्ट ऑर्गेनिज्म किए बैक्टीरिया आमर क्लोनिंग वेक्टर किए प्लास्मिड. ओके तापरे सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए दैट कैन सेल्फ रिप्लिकेट विद इन होस्ट सेल. तो आमे सेई जो वेक्टर प्लास्मिड टाकू आगो खोजीबा कहीं सब बैक्टेरिया देह रे प्लास्मिड न थाए हैला. तो से पे जदी बैक्टीरिया तुमको गोटे मिलिला जार प्लास्मिड टाकू भी आमे यूज कर पाइबा बहुत बढ़िया कथा. नहले आमे कोठू गोटे प्लास्मिड आनिबा आउ को गोटे बैक्टीरिया रे ऐड. तो एनीथिंग इज पॉसिबल. इफ यू आर लकी you will get a plasmid and the bacteria. Otherwise, we will take some bacteria's plasmid and use it in some another bacteria. बुझला. तापरे प्रिपरेशन ऑफ डीएनए टू बी क्लोन. हमर एटा को क्लोन आमे नेबा ताकू सपोज हमर इंसुलिन जीन नेबा
तो जो लोकर इन्सुलिन नाही तापई आमे कौन करिबा इन्सुलिन जीन टाको आनिबा कोठु आनिबा गोटे हेल्दी ऑर्गेनिज्म ओके सपोज गोटे मनीष अछि सपोज तार भाई बंधु किए अछि ता देहरु आमे इन्सुलिन जीन को आइसोलेट करिबा तो प्लीज रिमेंबर इन्सुलिन जीन हमर एवरी सेल रे थिबो ईच एंड एवरी सेल हैज इन्सुलिन जीन किंतु कोठी सेटा एक्टिव फॉर्म रे मिलिबो सेटा को ही हमकु खोजियार अछि काना इनएक्टिव इन्सुलिन जीन को नेकी हमें किछि कर परिबा तो से पे एक्टिव इन्सुलिन जीन हमें कोठु पाइबा तो एक्टिव इन्सुलिन जीन हमें पाइबा कोठु बताओ फ्रॉम पैनक्रियास रो बीटा सेल बुझिगला तब आखिरे भी इन्सुलिन जीन अछि तम पेटरे भी इन्सुलिन जीन अछि तमर गोडर हाड़ सेल रे भी इन्सुलिन जीन अछि बट दे आर ऑफ नो यूज काना से सब इनएक्टिवेटेड अछि तो एक्टिव इन्सुलिन जीन हमें कोठु पाइबा पैनक्रियास रो बीटा सेल्स तो हमको पैनक्रियास रु बीटा सेल कलेक्ट करियार अछि सेई बीटा सेल रु हमको इन्सुलिन जीन टाको आइसोलेट करियार अछि केमिति कोन करियार अछि हमें टिके पर डिस्कस करिया हला सेई इन्सुलिन जीन टाको हमें इंसर्ट वेली कहिबा ओके सो दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट तो इंसर्ट और जीन ऑफ इंटरेस्ट हला तो एई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें प्लास्मिड देह रे ऐड करिबा ताहले हमर रिकम्बिनेंट डीएनए तयारी हबो सेई प्लास्मिड टाको हमें बैक्टीरिया को दबा ताहले बैक्टीरिया हमर डीएनए टाको तयारी करियो हला तो सेई पे एबे हमें इंसुलिन जीन आनिले तो वी हैव ब्रॉट इंसुलिन जीन फ्रॉम मैन प्लस ऐड इट टू कौन प्लास्मिड तो प्लास्मिड को ऐड करबा तो एथरे करिले कौन हबो तो हमर रिकम्बिनेंट डीएनए तयारी करी रिकम्बिनेंट डीएनए रो माने होची डीएनए फ्रॉम मोर देन वन सोर्स हैला तो एथरे तमे कौन देखुचो बैक्टीरिया रो प्लास्मिड प्लस हमर ह्यूमन इंसुलिन जीन तो हेगला दीटा ऑर्गेनिज्म तो जो दीटा ऑर्गेनिज्म हेतरे कौन कौन अछंती बैक्टीरिया रो प्लास्मिड ताकू आमे काटिले एंड आमर इंसुलिन जीन सेथरे ऐड करिले तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए तापरे थरे आमर रिकम्बिनेंट डीएनए तयारी हे गला एबे ताकू आमे कोन करिबा वी विल ऐड इट टू दी होस्ट हे गला तो आमे सेई जो रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया को दबा ओके ना सबुठ बड़ प्रॉब्लम कौन होची आमे ना तो बैक्टीरिया को देखि परिबा ना ही प्लास्मिड डीएनए को देख परिबा ना ही इंसुलिन जीन को देख परिबा तो सेई पे एई सब जिंस अंधकार हुए मन रखता नन ऑफ दिस थिंग्स वी कैन सी विथ आवर नेकेड आई तो सेई पे हमको हमर टेक्निक ऊपर विश्वास करिवार अछि ओके वी हैव टू बिलीव इन आवर टेक्निक तो एबे कौन करिबा तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमें देले को बैक्टीरिया हमर डीएनए टा नेला आउ को बैक्टीरिया हमर डीएनए टा नेलानी ताकू हमको सिलेक्ट करिया सो सेई पे नेक्स्ट स्टेप कौन लिखा है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए हैला तो हमर डीएनए को बैक्टीरिया नेला ताकू हमको बाछिया हेगला काहे कि ना माने सबु बैक्टीरिया हमर डीएनए न भी नहीं थाई हैला नहीं गेला हमें वी हैव सीन स्क्रीनिंग फॉर क्लोन्स विथ डीएनए इंसर्ट एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हेगला तो तापरे हमें जो बैक्टीरिया हमें यूज जो हमें जो बैक्टीरिया हमर डीएनए को नेची ताकू स्क्रीनिंग करिबा प्लस ताकू क्लोनिंग करिबा क्लोनिंग माने कोन ताकू मल्टीप्लाई करेबा हैला तो आमे कोन करिबा कष्ट मष्ट जदि आमे गोटे भी रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया तयारी कर परिबा
ताहाले ताकू भल कंडीशंस देकी आमे कोटी कोटीटा बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करे परिबा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो जेबे बैक्टीरिया आमर कोटी कोटीटा हे जीवो तापर ताकू स्टिमुलेट करिवा से किमिति आमर प्रोटीन इंसुलिन ताकू प्रोड्यूस करू हैला। सो दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट आउ वेक्टर तैयारी करा खोज तापरे जो वेक्टर डीएनए अछि सेइथरे आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके ताकू जोड़ी की रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयारी कर। एई जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आमे तापरे होस्ट ऑर्गेनिज्म भितरे ऐड करिवार अछि। थरे होस्ट ऑर्गेनिज्म आम डीएनए नहीं गला तापरे तांकू जो माने नहीं नांती तांकुठू अलगा करिवार अछि। अलगा हैला परे आमे जो थरे आमर डीएनए अछि से बैक्टीरिया को क्लोनिंग करिवार अछि। क्लोनिंग रो माने होची कॉपी। ओके तो तार लक्ष लक्ष कॉपी करियार अछि एंड तापरे से जो क्लोन मानकू स्टिमुलेट करिकी आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करिया पे स्टिमुलेट करिवार अछि। बुझिगला। सो दिस इज व्हाट इज आवर जॉब। तो एटा बहुत सहज नहीं रहा। तो आजिकली एटा बहुत इजी हे गेलानी बिकॉज नाउ वी हैव एक्सीलेंट टेक्निक्स बट आग काले इट वाज वेरी वेरी टफ हैला। चलो सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो एटा होची हमर टू कंपोनेंट्स ऑफ जीन क्लोनिंग होस्ट आउ वेक्टर। होस्ट माने जीए आमर डीएनए टाकू मल्टीप्लाई करके आम प्रोटीन टा तैयारी करी। तो से प्रोकैरियोटिक भी हेई पारे लाइक इक्वलाई से यूकैरियोटिक भी हेई पारे लाइक ईस्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तमे से जो जीन टा को देहरे भी पुरई पारी हैला। वेक्टर वेक्टर माने जीए आम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को नबो। तो जदि आमे प्रोकैरियोटिक नेबा तारे प्लास्मिड नेबाम पड़िबो बैक्टीरियोफेज नेबाम पड़िबो हैला या बैक भी नहीं परिबो हैला। तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ताकू भी हमें यूज कर परिबा। जदि यूकैरियोटिक सेल हमें यूज करिबा ताले ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या प्लांट्स रे टीआई प्लास्मिड यूज कर परिबा या जदि एनिमल्स रे वैक्सीनिया वायरस। तो दे आर द वेक्टर्स हैला। तो वेक्टर माने किए जे आम देहरु जीन नहीं की बैक्टीरिया देह को जीव। ओके एटा बहुत कष्ट पाठटा हैला से पे भलरे बुझ किसी डाउट्स देले पछारी। एटा होची जो बेसिक स्टेप टा हमें डिस्कस करले एटा होची बेसिक स्टेप टा हमरा। तो वेक्टर रे हमें एठी प्लास्मिड नेचु एंड एटा होची फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए माने कोन हमें कोठु आनिले फॉरेन डीएनए बीटा सेल रो पैनक्रियास रो बीटा सेल रु हैला। तो पैनक्रियास रो बीटा सेल रु आमे डीएनए टा काढिले ए जो पूरा जो डीएनए टा होची पैनक्रियास सपोज तमे किछि भी यूज कर पारिबो। मु तुमको ह्यूमुलिन प्रोडक्शन करौची जोटा तम एनसीईआरटी बहरे देइछ हैला। तो एई फॉरेन डीएनए टा होची ह्यूमन बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास डीएनए से जो रेड अंशटा कौन देखौची इंसुलिन जीन। बुझिगला। तो आमर पूरा डीएनए रे 30,000 जीन थिबो सेइथरु आमर इंसुलिन जीन टा हमकु दरकार। ओके सेपटे वेक्टर आमे खोजी की काढी देइछे। तो एठी आमे को वेक्टर टा यूज करूछु प्लास्मिड वेक्टर हैला। तम बही रे को प्लास्मिड टा देछि पीबीआर 322 कोन एडा पर डिस्कशन हैला। तो हाउ टू ऐड दिस फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर ताको हमकु काटियम पड़िबो। तो से पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन माने कोन ब्रेकिंग डाउन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करिबा तेरे वेक्टर को भी काटिबा
एंड फॉरेन डीएनए को काटिदेले तो आम डीएनए काटिकी एई जो इंसुलिन जीन को आम आइसोलेट करिलु ताकू कौन कह जाउची इंसर्ट तापरे लाइगेशन करबा कोएंजाइम देकी डीएनए लाइगेज तो डीएनए लाइगेज नहीं कि आमे जीन टाको एथरे जोड़ दो सो एबे एई जो जीन टा हे गेला हमर कोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लस क्लियर तापरे आमे एई बैक्टीरिया गुडा को होस्ट को दबा हैला तो होस्ट ताकू नेला परे सेई होस्ट टा हे जीवो कोन हमर डिजायर्ड हैला ताकू खोजी करियाम पड़िबो तापर ताकू हमें प्रोपागेशन करबा क्लोनिंग करबा तो प्रोपागेशन इज आल्सो नोन एज क्लोनिंग तापर ताकू स्टिमुलेट करले से हमर प्रोटीन टा तयारी कर क्लियर तो एटा होची हमर बेसिक स्टेप गुडा हैला तो ये बेसिक स्टेप टाकू बुझिया पे हमको फर्स्ट कौन करियाम पड़िबो तार रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करियाम पड़िबो तो फर्स्ट रॉ मटेरियल हमें कौन डिस्कस करूचे प्लास्मिड वेक्टर बुझियला तो नाउ व्हाट आर प्लास्मिड्स तो प्लास्मिड्स आर ऑटोसोमली देखो ए जे एतुडे पॉइंट अछि तमे कोटा मन रखिबो सेटा मु टिक कर दोची से तमे खाता रे लिखि दियो हैला नाउ प्लास्मिड वेक्टर कौन देखो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास रे डिफरेंस अछि किंतु जो पिला सीरियस से ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन क्लास वाला भाभी पारिबो तो जोटा हमें कहूची लिखि दियो एटा तमे गोटे खाता रे लिखि दियो ताले तमरो से रेडी हे जिवो हैला तो प्लास्मिड्स अरे आमे दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डी ओके नाउ मु तुमको आउ गोटे स्क्रीन को नहीं की जाउची सेठी आमे डिस्कस करिबा कि एक्चुअली कथाटा को हैला तो now I'm sure you are able to see the board तो एटा होची हमर कोन so now suppose this is a bacteria हैला एटा होची गोटे बैक्टेरिया तो तमे जानिଛ बैक्टेरिया रो गोटे सेल वॉल थिबो ओके सपोज दिस इज द सेल आमे टिके ताकू मोटा कर दवा तो बैक्टेरिया सभा बाहर कौन थिबो तो सभा बाहर थिबो सेल वॉल हैला तो दिस ऑरेंज कलर इज सेल वॉल तापरे दिस इज सेल वॉल तापर एटा होची कौन सेल मेम्ब्रेन हैला तापरे तार गोटे जेनेटिक मटेरियल थिबो तो एटा होची तार जेनेटिक मटेरियल ताकू हमें जीनोमिक डीएनए करिबा जीनोमिक डीएनए एटा सब बैक्टेरिया रे ऑल बैक्टेरिया रे तांकर निजर जीनोम थिबो बट किछि किछि बैक्टेरिया रे प्लास्मिड्स भी थाई पार these are called plasmids plasmids are extra chromosomal DNA तो एटा होची जेनोमिक डीएनए को हमें कौन कहबा क्रोमोसोमल डीएनए हैला तो क्रोमोसोमल डीएनए छड़ा आउरी जदि डीएनए से ऑर्गेनिज्म रे थाए ताकू एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कुहा जाय हैला तो प्लास्मिड कौन तार प्रॉपर्टी कौन डज नॉट रिक्वायर ओके क्रोमोसोमल डीएनए फॉर इट्स रेप्लिकेशन बुझिगला तो से पे सेटा इंडिपेंडेंट अछि ओके तो हमर प्लास्मिड ता कौन रेप्लिकेट करिया पे ताकू क्रोमोसोमल डीएनए रु किछि भी इंस्ट्रक्शन दरकार नहीं से ता बिना भी रेप्लिकेट करी पारिबो ओके
तो एबे आमे जो डीएनए तो टू ऐड डीएनए को डीएनए ह्यूमन डीएनए वी हैव टू ऑप्शंस हम पाखर दीटा ऑप्शन हेगला कोटा कोटा नंबर 1 क्रोमोसोमल डीएनए नंबर 2 प्लास्मिड डीएनए बुझीगला तो आमे एइथरे भी जीन ऐड करि परिबा एइथरे भी हम जीन टा ऐड करि परिबा ताहाले कोथरे करिबा हैला तो दैट इज व्हाई आमे सिलेक्ट करिबा सपोज प्लास्मिड तो वाई प्लस आमे प्लास्मिड रे काहे की जीन टा ऐड करिबा बुझियलो कि नहीं तो प्लास्मिड रे जीन करिया पई आमे काहे की प्लास्मिड को ऐड करिबा ओके तो सेइथरे पॉइंट नंबर 1 इट इज स्मॉलर therefore will replicate faster बुझिगला तो प्लास्मिड टा रे 8 10 टा 15 टा जीन थिबो तो सेई पई सेटा फास्टर रेप्लिकेट करी बुझिगला हमर जीनोमिक डीएनए टा बड़ थिबो सपोज एते 100 रु 200 जीन थाई पारे तो 100 रु 200 जीन को रेप्लिकेट करिबा विल टेक लॉन्गर टाइम एंड 8 रु 10 टा जीन को रेप्लिकेट करिबा इज विल टेक लेसर टाइम हैला तापरे नंबर 2 पॉइंट कोन इट replicates independent to chromosomal DNA माने ताकू रेप्लिकेट करिया पई हमर क्रोमोसोमल डीएनए रो किछि भी इंटरफेरेंस दरकार नाही ठीक अछि तापर नंबर 3 पॉइंट कोन प्लास्मिड्स if present can be more than one per cell ठीक अछि but chromosomal DNA is always one तो हमर उद्देश्य कोन बेसी रु बेसी प्रोटीन तैयारी करबा तो बेसी रु बेसी प्रोटीन तैयारी करिया पे हेले आमे एक रु सपोज आम पाखे गोटे क्रोमोसोमल डीएनए अछि एक रु 100 कोटी हम प्रोटीन तैयारी करिया अछि तो एक रु 100 कोटी करिवाटा सहज ना 100 रु 100 कोटीटा करिवा सहज तो ऑब्वियसली 100 रु 100 कोटीटा तो 100 रु 100 कोटी माने प्लास्मिड हमकु यूज करिया पड़िबो काहे कि ना बहुत बैक्टीरिया थांती तांका पाखरे गोटे रु बेसी प्लास्मिड थाए अप टू 200 प्लास्मिड थिबा वाला भी बैक्टीरिया अछन किंतु जेनेटिक डीएनए सबबेले गोटे ही थिबो ओके तो वाई प्लास्मिड गोटे तो स्मॉलर इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंट टू क्रोमोसोमल तापरे इट कैन बी मोर देन 1 पर सेल ठीक अछि तो आपरे फोर्थ पॉइंट कोन does not affect okay viability of bacteria तो सपोज आमे किछि छेड़छाड़ करिले क्रोमोसोमल डीएनए रे आउ बैक्टीरिया मरि गल हैला तो जेनेटिक डीएनए रे यदि आमे किछि छेड़छाड़ करिबा तो बैक्टीरिया में डाई then who will make your protein किंतु जदि आमे प्लास्मिड रे ऐड करिबा तो बैक्टीरिया मरु नाही ओके तो इट विल नॉट किल द बैक्टीरिया डू यू अंडरस्टैंड तो सेही पई आउ गोटे कारण होउची कि जेनेटिक डीएनए रे ऐड करिले बैक्टीरिया रा सर्वाइवल को अफेक्ट करि पारे किंतु प्लास्मिड रे करिले करिबो नाही
क्लियर तापरे एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट इट हैज many special genes that help us to locate our bacteria. ठीक अछि माने एबे देखो तमे 1000 बैक्टेरिया रु किमिति जानिबो को बैक्टेरिया तम प्लास्मिड नेला बुझल तो को बैक्टेरिया तम प्लास्मिड नेला ताकू चिन्हिबा पे आमे प्लास्मिड यूज कर परिबा काहे कि तादागर बहुत बड़े स्पेशल जीन अछि नंबर 1 आर जीन कौन सी ताकू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओके तो को ना को एंटीबॉडी सपोज आम बैक्टेरिया में जो नहींचे है आम बैक्टेरिया रे जो प्लास्मिड अछि सेई थरे सपोज एम्पिसिलिन आउ टेट्रासाइक्लिन रा रेजिस्टेंस अछि बुझिगला तो एम्पिसिलिन आउ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अछि आम बैक्टेरिया रे सपोज हैला एटा हमें सपोज करछु को भी एंटीबायोटिक हेई पारे तो आमे केमिति चिनिबा आम बैक्टेरिया को तो आमे कोन करिबा जो कल्चर मीडियम रे एम्पिसिलिन ऐड कर दब तो जेबे हमें कल्चर मीडियम रे एम्पिसिलिन ऐड करी देबा तो आम बैक्टेरिया रे रेजिस्टेंस अछि तो से बंचीबो आउ अलगा बैक्टेरिया रे सेही रेजिस्टेंस न थाई पारे तो जा पाखरे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नथिबो से माने मरि जिवे बुझिगला तो सेही पे आकु आमे सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहू ओके तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन माने कोन आमे चिन्हिया पे ताकू यूज करि पारिबा ओके अंडरस्टूड तो ताकू आमे कोन कहूचु सिलेक्टेबल मार्कर्स तो आम बैक्टेरिया को चिन्हिया पे आमे यूज कर पारिबा तमे कहबो नाही सर जदी आउ को बैक्टेरिया रे भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अछि तो जदी सपोज दीटा बैक्टेरिया रे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अछि आमर आउ गोटे बाहर आमे नेक्स्ट कल्चर रे टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दबा तो नेक्स्ट कल्चर रे टेट्रासाइक्लिन ऐड कर देले कोन हबो तो से आउ कहार बैक्टेरिया मरि जिवो आम बैक्टेरिया बंची जिवो तमे कहबो नाही सर जदी टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंस अछि तो माने कोन इट इज वेरी वेरी रेयर बट हेई पारे तो सेई पई आमे कोन करछु आजिकली डिजाइन्ड प्लास्मिड नौछु तो किछि किछि प्लास्मिड आमे नौछु जो थरे बेसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थिबो हैला जेते बेसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थिबो सेते क्लियरली आमे आम बैक्टेरिया को लोकेट करि पारिबा गोटे भीड़ ऑफ बैक्टेरिया डू वी अंडरस्टैंड सो इट इज सो आर जीन गोटे रु बेसी थाई पारे सपोज ताम पाखरे ऑप्शन अछि तमे गोटे प्लास्मिड नबो जो थरे गोटे रेजिस्टेंस अछि एंड आउ गोटे प्लास्मिड नबो जो थरे पांचटा रेजिस्टेंस अछि तो कोटा बेटर हबो ऑब्वियसली पांचटा काइना सबु बैक्टेरिया रे पांचटा जाक सेम थिबो बोले किछि माने अछि कि अंडरस्टूड so that is why R gene is very important to locate our bacteria तापर सेकंड होची निफ जीन्स कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करियारे साहाय्य करिवो थर्ड होची तमरा कॉल जीन्स को हमें कहू कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर हेला तो कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर माने कौन तो
prevent other bacteria to grow. बुझिगला? So like in our vagina, in human vagina, there is lactobacillus acidophilus. ହେଲା? तो एटा हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया बुझिगला? तो ह्यूमन वेजाइना रे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस अच्छी तो जदि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस अच्छी तार कॉल जीन कौन करिवो सेठी आउ को बैक्टीरिया को ग्रो करी दबो नहीं बुझिगला सो दैट इज व्हाई आमर वेजाइना रे गोटे बैक्टीरिया अच्छी एंड दैट इज फ्रेंडली तो आमर फ्रेंडली बैक्टीरिया आउ को हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करी दबो नहीं बुझिगला तो दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट तो कॉल जीन्स अर्थ बुझीगल तापरे नेक्स्ट होची एफ जी ताको आमे कहूचु फर्टिलिटी फैक्टर हैला फर्टिलिटी फैक्टर ये कौन करे प्रोड्यूसेस सेक्स पिली और कॉन्जुगेशन ट्यूब हैला और कॉन्जुगेशन ट्यूब तो से कॉन्जुगेशन ट्यूब तैयारी करिया पे सहाय्य करो हैला ता माने तो इधर दी प्रकार बैक्टीरिया थिबो बैक्टीरिया विथ प्लास्मिड और प्लास्मिड माने एफ फैक्टर अछि तो ताको हमें कौन कहबा एफ प्लस या मेल या डोनर बुझिगला तो जो बैक्टीरिया रे एफ जीन थिबो ताको हमें प्लास्मिड थिबो ता माने एफ फैक्टर अछि और जदि एफ फैक्टर अछि ताको हमें एफ प्लस स्ट्रेन कहबा या मेल कहबा या डोनर कहबा ठीक अछि नेक्स्ट होची बैक्टीरिया विदाउट प्लास्मिड तो प्लास्मिड नहीं माने देयर इज नो एफ फैक्टर तो ताको हमें कहबा एफ माइनस स्ट्रेन या फीमेल या रिसिपिएंट तो बुझिगला तो एबे हमें बहुत गुडे पॉइंट देखिले कि काहीकि हमें प्लास्मिड को सिलेक्ट करूचे एंड जेनेटिक डीएनए को सिलेक्ट करू बुझिगला तो हमें देखिथिले कि होस्ट रो गोटे जेनेटिक डीएनए अछि आ क्रोमोसोमल डीएनए आ प्लास्मिड थाई पारे तो जदि प्लास्मिड अच्छी ताहले हमें प्लास्मिड को ही वेक्टर नेबा काहीकि पॉइंट नंबर 1 इट इज स्मॉलर जल्दी रेप्लिकेट करिवो पॉइंट नंबर 2 रेप्लिकेशन पे क्रोमोसोमल डीएनए रो इंफॉर्मेशन दरकार नहीं पॉइंट नंबर 3 it can be more than one per bacteria पॉइंट नंबर 4 सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया को है माने अफेक्ट करूनी पॉइंट नंबर 5 स्पेशल जीन्स थाई पारे लाइक आर जीन निफ जीन्स कॉल जीन्स एंड एफ फैक्टर एटसेट्रा बुझिगला सो ए सबु कारण पे हमें डिसाइड करिल्या कि आमे प्लास्मिड टाकू वेक्टर हिसाब रे नबा प्लास्मिड रे हम डीएनए ऐड करिवा एंड ताकू होस्ट को दो आई होप यू अंडरस्टैंड काकू प्रॉब्लम थिले यू कैन आस्क एटा सब टी डिफिकल्ट कांसेप्ट्स तो प्लीज यदि किछि असुविधा होची पचारिबो मु आउ थरे बुझो देबी एट आई एम डैम स्लो तो आई एम श्योर मो स्पीड पे तुमको किछि प्रॉब्लम ठीक अछि so now we will go to the next slide
ठीक अच्छे तो एबे आमे एटा टिके एडवांस पॉइंट्स देखिबा तो एथरा आमे कोन देखुचे so they are autosomally replicating circular extra chromosomal DNA. They are standard cloning vectors माने बहुत commonly use होची. Most general plasmid used to clone up to 15 kilobyte size. बुझला माने जदि तमरा DNA 15 किलो बेस माने कौन हजार तो जदि आमर डीएनए जेंति इंसुलिन जीन आमर इंसुलिन जीन रे कौन अछि आमर इंसुलिन जीन रे 51 कौन 51 कौन अछि एमिनो एसिड्स तो जदि 51 एमिनो एसिड अछि इनटू 3 माने 3 153 न्यूक्लियोटाइड्स रु बेसी थे Hela? So suppose our insulin gene has will code for 51 amino acid, ता माने ता DNA रे 153 न्यूक्लियोटाइड्स रु बेसी जीन थिबो तो आमर साइज केते अछि 15000 तो 15000 को आमर एठी 150 होउछ ता माने आमे एई जीन टाकू नै पारिबा कोथरे तो we can take this gene in the plasma किंतु डिस्ट्रोफिन जीन हैला एडा टाइटिन जीन हैला टाइटिन रे 30,000 अमीनो एसिड होची तो 30,000 अमीनो एसिड माने तमर न्यूक्लियोटाइड टा कम से कम केते हे जीवो 90,000 हे जीवो तो 90,000 न्यूक्लियोटाइड रु बेसी तो सेटा हमें प्लास्मिड रे नै पारिबा तो प्लीज रिमेंबर if the size of insert DNA is smaller, we can use plasmid. If the size of insert DNA is larger, we cannot use plasmid. हमें सही केस रे बैक यूज करिबा बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा एटा अलग अलग वेक्टर अछि एटा हमें टिके पारे डिस्कस करिबा हला नाउ हमें देखिबा नेचुरल वेक्टर या आर्टिफिशियल वेक्टर ठीक अछि तो नेचुरल प्लास्मिड यूज करिबा ना आर्टिफिशियल प्लास्मिड यूज करिबा तो सुनो हमकु जो जिंस दरकार सबु जाक किछि माने अछि कि गोटे ही प्लास्मिड रे मिली जीवो अंडरस्टूड so you may have plasmids which has some or the other requirement but not all तो सेही पे if you are very lucky ताले सबु जाक तमर रिक्वायरमेंट गोटे प्लास्मिड रे मिलिबो बट आमे तो जानि छे मोस्ट ऑफ अस वी आर नॉट सो लकी तो सेही पे नेचुरल प्लास्मिड रु भल होची आर्टिफिशियल प्लास्मिड तयारी कर क्लियर तो आमे विल गो टू द अदर स्लाइड विल अंडरस्टैंड ता माने कोन Now, natural plasmid versus artificial plasmid. Okay. तो artificial plasmid का ना can have all genes that we require. हैला तुम गोटे होटेल जाकि खाइल चिकेन कषा तो तमे लुण कम खाऊच तमे राग बेसी खाऊच तमे चिकेन कषारे चीनी बिल्कुल पकेबनी तम चिकेन कषा मीठा टिके थिबा दरकार सेथरे टमाटो पड़िबा कथा नुह अरे भैया वो होटेल है सी तो समस्त पे रोसे करिवो ना से तम पे करिवो की तो सेही पे होटेल रे जदी खाऊच तुमको ता अनुसार रे सिलेक्ट करिया पड़िबो ना तम अनुसार से करिवो की तो सेही पे तम अनुसार जदी खाइबार अछि घरे खाइबो डू यू अंडरस्टैंड
तो natural plasmids may not have all genes that you require. तो सेही पे आर्टिफिशियल प्लास्मिड आमे यूज करिबा तो एटा होची बेस्ट। तो सेतर बढ़िया एग्जांपल होची PBR 322 एटा तम बही रे देइची। तो सेटा P stands for what? Plasmid. B stands for Bolivar. R stands for Rodriguez. तो बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ताकू डिस्कवर करिथिले। बुझिगला एइथरे प्लस पॉइंट कोन अछि? एइथरे तमर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स रहउछ। ठीक अछि। So this is the beauty of PBR 322 plasmid. आउ गोटे प्लास्मिड अछि तम पाखरे एटा बहुत सिंपल टा बुझौची तापरे आमे हायर टा बुझिबा हला। तापरे आउ गोटे एनसीईआरटी देई देछि लैक जेड जीन। अरे बाबा तमे तो बही रे देइछ PBR 322 PBR 322 लैक जेड जीन न थाए। बुझिगला। तो सेही पे एनसीईआरटी टा बुझिया पे भी तुमको एक्स्ट्रा पाठ आसीबा दरकार। हे गला। तो इट डज नॉट हैव लैक जेड हैला। तो लैक जेड कोथरे अछि? PUC प्लास्मिड। अगेन व्हाट इज PUC? P stands for plasmid, U stands for university, C stands for California. तो जो प्लास्मिड टा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डिस्कवर करिले ताकू कुआ जाए PUC प्लास्मिड। तो सेही थरे कोन अछि? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अछि एंड लैक जेड जीन। ना तुम कहबो लैक जेड माने कोन? तो लैक जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। एटा तमे लैक ऑपरेंड रे पढिथिबो हला। लैक ऑपरेंड रे लैक जेड जीन देछि कि नहीं? तो से कोन करूछि? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोड करूछि। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोन करिवो? लैक्टोज को भांगी की ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तैयारी करिवो। पर सेतर आमर कोन हबो? आमर किछि लाभ नहीं। तो आमे कोन करिबा? गोटे मॉडिफाइड सबस्ट्रेट देबा एक्स गैल। तो एक्स गैल ता होची मॉडिफाइड सबस्ट्रेट। एटा एनसीईआरटी रे देइनी किंतु ब्लू कलर व्हाइट कलर देई देछि। बुझिगला। तो एक्स गैल होची मॉडिफाइड सबस्ट्रेट एटा होची कलरलेस। तापरे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ताकू भांगी की कौन कर दबो? ब्लू कलर प्रोडक्ट तैयारी करिबो। बुझिगला। तो जदी आमे PUC प्लास्मिड नैछे तो आमर एनसीईआरटी रे PUC प्लास्मिड देइनी किंतु लैक जेड जीन विषय दे देछि। तो से निजे निजे कंफ्यूज करोछि पिला। तो से पे एटा भलरे तमे निजे बाहर टिके जानिबा दरकार। तो जो थेरे भी लैक जेड जीन थिबो से जो लैक जेड जीन तो से लैक जेड जीन रे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तैयारी हबो। से नेचुरली लैक्टोज को भांगे। किंतु आमे जदी गोटे अल्टर्ड सबस्ट्रेट दबा एक्स गैल ताकू कुहा जाए। तो एक्स गैल टा होची कलरलेस। तो जदी तमर एंजाइम टा फंक्शन करूची हला। तो एठी गोटे कंडीशन अछि इफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल ताहाले ब्लू कलर हबो। इफ बीटा गैलेक्टोसाइड नॉट फंक्शनल ताहाले व्हाइट कॉलोनीज हे गला। कलरलेस माने कोन? व्हाइट। तो बुझिगला। तो सेही पेई आमे ताकू भी गोटे सिलेक्टेबल मार्कर भलिया यूज करी पारी। प्लस तुमको बारंबार ताकू
रेप्लिका प्लेटिंग करिया हेगला सेई पे एटा बुझिलो कि नहीं तो एई जिंसटा बही रे तमर देइनी कि काहे कि सेटा व्हाइट हुए काहे कि सेटा ब्लू हुए तो एक्स गैल गोटे मॉडिफाइड सबस्ट्रेट तार सबस्ट्रेट ता होची कलरलेस किंतु जदी से डाइजेस्ट हे जाउची ताहले कोन हबो आमे सेटा ब्लू कलर प्रोडक्ट दबो और जदी डाइजेस्ट होनी ताहले व्हाइट कलर दबो तो आमर जदि जो इंसुलिन जीन टा तो जदि आमे इंसुलिन जीन लैक जेड रे ऐड करिबा बुझिगला तो लैक जेड जीन भितरे ताको आमे काटी देबा लैक जेड जीन टा काटी देले कोन हे जीवो तो एंजाइम टा बेकार हे जीवो तो लैक जेड जीन भितरे मझिरे जदि आमर ऐड हे गला इंसुलिन जीन ता माने कोन हबो एटा ई वर्ष नीट रे दीटा क्वेश्चन आस्तिला प्लीज रिमेंबर ए सेम कांसेप्ट रे दीटा क्वेश्चन आस्तिला ओके तो प्लीज एटा बुझो ता बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हैला तो आमे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आमे एम्प आर रे ऐड करिबा ताले कोन हबो को ताहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल रहिबो एटा नष्ट हबनी तो से केस रे ब्लू कॉलोनी मिलिबो किंतु इफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड टू लैक जेड ताले कोन हबो आमर नॉट फंक्शनल माने एंजाइम टा नष्ट हे जीवो तो आमर सबस्ट्रेट तयारी हबनी ताले आमर व्हाइट कलर बुझिगला ता माने जदि आमर लैक्टोज जीन मझिरे लैक्जेड जीन मझिरे ओके सपोज ओके आमे लैक्जेड जीन मझिरे आमर इंसुलिन जीन टा ऐड कर दवा ता माने कोन हेला सीक्वेंस चेंज हे गेला तो से एंजाइम टा बेकार हे जीवो आकु कोन कोआ जाय एलियन जीन इनएक्टिवेशन आमे एलियन डीएनए ऐड करिले सेते कोन हे गेला आमर लैक्जेड इनएक्टिवेट हे गेला तो एलियन जीन इनएक्टिवेशन हे तो जब एलियन जीन इनएक्टिवेशन हे गेला आउ लैक्जेड क्रा काम करिवनी ता माने से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तयारी करिवनी तो जदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तयारी करिवनी एक्स गैल डाइजेस्ट हबनी तो कलरलेस या व्हाइट कॉलोनी तयारी तो से बैक्टीरिया गुड़ा व्हाइट व्हाइट ठीक अछि बुझलो कि ना एटा किंतु जदि तयारी हबो इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर ओके जदि हम एम्पायर रे जीन ऐड कर दवा ता माने लैक्सेट ओके तो तुमको मु पीबीआर 322 बुझेली एंड तुमको पीयूसी क्लासमेट भी बुझेली हैला तो नाउ बैक टू आवर मेन स्क्रीन तो इतरे मेनी क्लासमेट्स हैव वेरी हाई कॉपी नंबर माने सीए 500 रु 700 कॉपी भी करि पारे को क्लासमेट पीयूसी 19 तो जदि हमें पीयूसी 19 यूज करिबा तो गोटे बैक्टीरिया रे 500 रु 700 प्लास्मिड रखि पारी बुझिगला तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बेसी हे जीवो however low copy number plasmids may be preferable in some cases हैला तो तम इच्छा तमे हाई कॉपी नंबर भी नहीं पारो लो कॉपी नंबर भी नहीं पारो क्लियर तो एटा होची तमर प्लास्मिड जीन दिस इज प्लास्मिड द फर्स्ट recombinant DNA molecule to be generated using by Herbert Boyer and Paul Burr तो एटा प्रथम थर तयारी करथिले हमें तो एथरा हमें कोन यूज करछे थोड़े ओरिसाइट अछि तमर एटा होची ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस ऑपरेटर साइट प्रमोटर सीक्वेंस एटा होची कोन द जीन एनकोडिंग रिप्रेसर एटा ओरिजिन साइट एटु रेप्लिकेशन आरंभ हबो एटा होची एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ठीक अछि नाउ एटा होची प्लास्मिड डिस्कवरी एथरा हमें गोटे जिंस जिबा सो naturally occurring plasmids काहे के हमें नेबानी
Number 1, copy number very less or 1. Number of restriction site माने को एंजाइम काटी परिबो सेटा भी चॉइस अछि तमरो बहुत कम, मे बी लेस, they may have no R gene or may have single R gene. तो आमे डिस्कस करते जितने बेसी R gene हेले हमको फायदा। ओके, तो एटा होची तमरो PBR 322 हला। तो created in 1977 in lab of Herbert Boyer at University of California San Francisco. It was named after Francisco Bolivar Zapata and Raymond L. Rodriguez. ठीक अछि, ए दी जनक नार दिया अछि PBR 4361 बेस पेयर अछि and 2 antibiotic resistant gene अछि कोटा कोटा। ओके, तमरा ampicillin resistance, ओके, and तमरा tetracycline resistance। ठीक अछि, तो gene ampicillin resistance and tetracycline resistance, it contains origin of replication of PMB1 माने आउ गोटे प्लास्मिड PMB1 रु तार origin of replication जीन ता नेचे ROP जीन माने कौन replication of plasmid gene। तो replication of plasmid gene माने it codes for all proteins that are required for DNA replication हला। The plasmid has unique restriction sites for more than 40 enzymes। 40 टा एंजाइम पई तार रेस्ट्रिक्शन साइट अछि। 11 of these 40 lie within tetar gene। ता माने जदि एई 11 टा तमे यूज करिवो तो तमरो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीवो। ओके, there are two sites for restriction endonuclease enzymes HEND3 and CLA1 within promoter gene। Okay, there are 6 key restriction sites including AMPR gene हैला। तो ता माने कौन आमर जो प्लास्मिड अछि, ओके, तो इन आवर प्लास्मिड तो एटा होची तमरो PBR 322 देखुछ। तो एटा तम एनसीईआरटी रे बहि देछि, एटा मु माने नेट रे उठैछि। एथरे को जीन तो PST1 इको आरएनए सो कोन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एटा जेबा पढिबा PST1 माने कोन प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी रु एई एंजाइम ता नियाइछि। इको R1 एस्केरिशिया कोलाई रु एई स्ट्रेन ता नियाइछि। BAM H1 बैसिलस amyloliquefaciens रु एई एंजाइम ता नियाइछि। SAL1 Streptomyces albus सेई टू एई जीन ता नियाइछि। PVU1 राउची हमर कोन प्रोटियस वल्गारिस सेई टू एई जीन ता नियाइछि। ता माने एई सब तुमको नावडा मन रखया पड़िबो। एटा हमें नेक्स्ट पॉइंट रे डिस्कस करिबा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बुझी गला। तो हमर PBR 322 रे ओरिजिन अछि। तो ओरिजिन रो काम कोन हमें डिस्कस कर दबा। तो ओरिजिन माने origin of replication माने एइठु हमर डीएनए टा रेप्लिकेशन आरंभ हबो हला। रोप जीन कोन रेप्लिकेशन of plasmid माने it has it codes for all enzymes required for replication। ना ये origin रा आउ गोटे पॉइंट अछि इंपोर्टेंट पॉइंट एटा कोन कॉपी नंबर डिसाइड करूछ। कॉपी नंबर माने कोन हाउ मेनी प्लास्मिड्स गोटे बैक्टीरिया रखी पारिबो। तो बुझियला। तो से पे ओरिजिन रो डबल फंक्शन अछि। फंक्शन नंबर 1 से टू रेप्लिकेशन आरंभ हबो एंड फंक्शन नंबर 2 कॉपी नंबर जीन माने केतेटा प्लास्मिड गोटे बैक्टीरिया रे रहिबो सेटा के डिसाइड करूची तमरा ओरिजिन। ओके, ताको हमें कॉपी नंबर कहू। अंडरस्टूड। तापरे हमर दीटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अछि एम्पार आउ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो माने हमर PBR 322 जति प्लास्मिड रे आमे हमर डीएनए इंसर्ट करिबा ताले हमको एम्पिसिलिन रे भी रेजिस्टेंस मिलिबो टेट्रासाइक्लिन रे भी रेजिस्टेंस। ठीक अछि।
तापरे केते गुडी एंजाइम दिया आइची जो थे आमे डीएनए रो काटिबा केना आम डीएनए ऐड करिया पई प्लास्मिड काटिया पड़िबो तो PST1 काटिले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नष्ट हे जिवो PVU1 रे काटिले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नष्ट हे जिवो BAM-H1 रे काटिले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नष्ट हे जिवो SAL1 रे काटिले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नष्ट हे जिवो PVU2 रे काटिले रेप्लिकेशन प्लास्मिड जीन जीवो ता माने और रेप्लिकेशन भी हबनी ता माने आमे टेंशन फ्री को जी एंजाइम रे यूज कर परिबा इको R1 क्ला1 आउ हिंड3 बुझी गला तो इको R1 क्ला1 आउ हिंड3 यूज करिले हमर प्लास्मिड रेप्लिकेशन रे किछि असुविधा हो नाही okay I hope it was interesting. Please remember, my dear children, this is a difficult topic. It is a very recent topic. आपको पढ़िया पे तमर बैकअप नॉलेज बहुत दरकार बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस जो माने बुझी पारु नथिबो ठीक पचारिबो ताले मु आउ थरे कहि देबी अंडरस्टूड because it a hottest area of questions गत वर्ष तमर बायोटेक्नोलॉजी रु पाखापाखि 10टा क्वेश्चन आसथिला नेट रे एंड जो पीयूसी प्लास्मिड जो मु तुमको कहली ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी मु नेक्स्ट क्लास रे देखैबी भी सही क्वेश्चन उडा हैला तो सही क्वेश्चन उडा देखैबी जोडा 2025 मसिया रे आसथिला ओके so now children it is already 9 o'clock so we will take a break for around 15 minutes we will rejoin at 9:15 to continue our next class say class रे हमें immune system को continue करिबा okay so I am giving you all break so I will now end the class but तब माने खाई पी के आउ थर रिजॉइन करिवो मु खाली क्लास टा को म्यूट कर दोछ okay so take a 15 minutes break we will rejoin at 9:15